नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है। आज हम सनातन संस्था का देवी पूजा और आध्यात्म का दूसरा दिन मना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जैसा हमने कल बताया था कि आप सबको आध्यात्मिक पूजा पद्धति और आध्यात्म से जोड़े रखने का शुरू करते हैं कुछ क्षणों में। सभी को हमारा विनम्र नमस्कार। मैं अभियोगी आपसे जुड़ रहा हूँ फिर से सनातन संस्था ऑफ यूके की तरफ से। आज माता का दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज आपको और बताता हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये रूप माता का, बहुत ही अद्भुत रूप है ये माता का, क्योंकि इस रूप से हमें भी समझ में आता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कितनी ज़रूरत है साधना की, कितनी ज़रूरत है हमें अपने आप को सिद्ध करने की, कि हम मनुष्य की जो कमियां हैं, जो नकारात्मकता मनुष्य को परेशान करती हैं, उनसे बाहर निकल सकें। और माता ने वही किया। तो कथा है कि माता जो है पार्वती के रूप में आई और उन्होंने जो है हमारी अ, एक ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, क्योंकि उनको महादेव से विवाह करना था। और वो अमरनाथ गुफा में चली गई, वहाँ पे उन्होंने जाके तपस्या करना शुरू की और वो वहाँ 14 साल 14 ईयर्स वहाँ रहीं, नंगे पैर चलीं, हाथ में कमंडल ले रखा था, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे और वो चलती रहती थी। फिर जब वो पहुँच गई अमरनाथ गुफा में, वहाँ उन्होंने अपनी एक तरीके से जो है शुरू की साधना। और साधना में भी चक्र होते हैं, तो आपको पता ही है अष्टांग के जो 8 जो जो पूरी सिस्टम है अष्टांग योग में, उसी को फॉलो करना पड़ता है कि यम नियम, आपको आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आपको माता को भी वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। माता को सिर्फ पार्वती से माता पार्वती तक का जो बनने का सफर है, वही उनका ब्रह्मचारिणी का रूप है। और आज के दिन माता को हम उन्हीं के बेसिकली फॉर्म में याद करें तो हमें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। हमें ये समझ में आता है कि अ, अगर हमें अपने जीवन में अपनी साधना से अपने आप को जो है एक पद्धति में लेके ढाला जाए, अगर हम एक नियम से अपनी साधना करें, तो हम भी ईश्वरीय तत्व तक पहुँच सकते हैं। मतलब ईश्वरीय तत्व तक पहुँचने का जो जो मार्ग है, वो माता ने हमें दिखाया है इस रूप से, कि कैसे एक जो है मनुष्य रूप में पैदा हुई हिमावन की पुत्री पार्वती आदिशक्ति माता पार्वती बनती हैं और महादेव से विवाह होता है। तो आज के दिन जो है हमें कायदे से तो चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और सनसेट पे करने चाहिए। बट आज जब हम ये मीटिंग ही 7:30 बजे कर रहे हैं यूके टाइम पे, तो अगर आपको मौका मिल जाए तो आप एक बार को देख लीजिएगा जाके बाहर, मून दिख जाए तो। क्योंकि माता जो है उनका जो रूप है, जैसा मैंने बोला, सफ़ेद वस्त्र है, हाथ में कमंडल है, ब्रह्मचारिणी है, बट पीछे जो है आभा जो है वो चंद्रमा की है। तो चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए सनसेट पे, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और हमें पढ़ना चाहिए देवी सुक्तम, या देवी सर्वभूतेषु जो है, और देवी महात्म्यम के भी चैप्टर्स जो हैं 2, 3, 4 पढ़ने चाहिए। और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम ये सारी पद्धति को फॉलो करते हैं तो माता हमसे प्रसन्न होती हैं, हमको आशीर्वाद देती हैं और हमें भी जीवन में एक
स्थिरता मिलती है। स्थिरता कि आप एक साधक बन जाते हैं। आपके अंदर भी वो ऊर्जा क्रिएट होने लगती है और आप उस तरीके से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है माता के इस रूप को समझना। अ, अब हम जो है चलते हैं अपनी आगे की साधना की तरफ और जो है हम शुरू करते हैं। जैसा हमने किया था कल, हमने 9 जो है नाम लिए थे माता के। आज हम उनके फिर 9 नाम लेंगे। हम हर रोज़ ये कार्य करेंगे और वैसे तो माता के 108 नाम हैं, तो हम कभी थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना है कि हम ये 9 दिनों में 108 नाम से जाप करें माता का। तो मैं शुरू करता हूँ फिर से। हर बार हम बोलेंगे त्वमेव साक्षात्, जिससे कि वो शक्ति जिनके हम आवाहन कर रहे हैं, वो हमारे सामने आए और साक्षात रूप में हमें आशीर्वाद दें। माता त्रिनेत्रा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री त्रिनेत्रा साक्षात् नमो नमः। अब हम माता का नाम लेंगे। माता शूलधारिणी। शूल यानी त्रिशूल। शिव त्रिशूल को धारण करने वाली शूलधारिणी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शूलधारिणी नमो नमः। पिनाक धारिणी। महादेव का जो धनुष है उसका नाम है पिनाक। तो पिनाक को भी वही धारण करती हैं माता आदिशक्ति। हम उनका नाम लेंगे एज माता पिनाक धारिणी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पिनाक धारिणी साक्षात् नमो नमः। माता चित्रा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमाता चित्रा साक्षात् नमो नमः। माता का एक रूप है चंद्र घंटा, वो आएगा चौथे दिन, हम उनकी भी उपासना करेंगे। तो माता चंद्र घंटा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता चंद्र घंटा साक्षात् नमो नमः। माता महातपा। मेरे साथ आप बोलिए। तो और अपनी एकाग्रता, एक आसन में बैठ जाइए, सुखासन में या अपनी जो ध्यान की अवस्था होती है उसमें, कुर्सी पे बैठे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। बस एक ध्यान एकाग्र अवस्था लेके इन मंत्रों का जाप कीजिए। ओम। तो माता महातपा, जिन्होंने महातप किया, माता ने महातप किया ना, तो माता महातप। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महातपा साक्षात् नमो नमः। ओम माता मानस। ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता मानस नमो नमः। माता बुद्धि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धि साक्षात् नमो नमः। और आखिरी में अहंकार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अहंकार साक्षात् नमो नमः। तो जो हमारे ईगो को समाप्त करे वो माता, उन माता की हमने उपासना की। इसमें हमें देवी कवच भी पढ़ना होता है, जो हम कल पढ़ेंगे।
हमें अर्गला स्तोत्रम भी पढ़ना होता है, हमें कुंजिका स्तोत्रम भी पढ़ना होता है, कीलिका स्तोत्रम भी पढ़ना होता है। बहुत से सूक्तम हैं जो हर दिन के लिए डिसाइडेड हैं। तो अब हम शुरू करते हैं देवी महात्म्यम का चैप्टर 2 to 4। आज के ही दिन जो है, कल मधुकैटभ का वध हुआ था, आज महिषासुर का वध हुआ दूसरे दिन। तो उसके ऊपर जो पूरा चैप्टर है उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश ही समझ में आ रही है, मुझे ये बताया गया है। संस्कृत मुश्किल है उनके लिए, तो मैं थोड़ा सा उसको संस्कृत पढ़ के उच्चारण करने का प्रयास करूंगा। द स्लॉटर ऑफ द आर्मीज ऑफ महिषासुर। आज अब हम देवी के उस रूप को याद कर रहे हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया। ओम अक्षरक्ष पराशुम गदेषु कुलीशां पद्मां धनु कुंदिकां दंडं शक्तिम असिं च चर्मजजं घंटं सूरभजनम्नि शूलं पाश सुदर्शने च दधिं हस्तै प्रसन्ननाम एवै सैराभ मार्दिनम इहा महालक्ष्मीम सरोजश्रितम। I resort to the Mahalakshmi, the destroyer of the buffalo demon, which is Mahishasur, who is seated on a lotus, is of the complexion of a coral, and holds in her 18 hands rosary, axe, mace, and arrow. Thunderbolt, lotus, bow, pitcher, rod, spear, sword, shield, conch, bell, trident, nose, and the Sudarshana. So the Rishi who has written this says, Mahishasur, the buffalo demon, was the lord of Asuras, of the lord of Devas. There was a war between the Devas and the Asuras, and it went for full 100 years. Finally, the armies of the Devas were finished by some Asuras. After conquering all the Devas, Mahishasur became the lord of the heaven. When these Devas went to Brahmaji, Brahmaji took them to Shivji and Vishnuji. The Devtas described them in detail what happened, the story of their defeat at the hands of the buffalo demon Mahishasur. Mahishasur himself was in the jurisdiction of Surya, Indra, Agni, Vayu, Chandra, Yam, and Varun. And he was able to host all the Devas which were in the heaven, and bring them as their slaves. So he has created a full army of the Rakshasas and the Asuras, and all the Devtas are slaves now. So after hearing this, Vishnuji was very angry, and so was Mahadev, and their faces became fierce with anger. So they decided that a great light from the face of Vishnu came across, and from Brahmaji and Shivji also came across, and from the bodies of Indra and some other powerful devtas, a strong light came out, and that, when united, created a mountain of light, and through that light, pervading all the worlds, came Shiva's light, and the face of Adi Shakti created Mata. By Yamas, it had the light of everybody. It had the arms of Vishnuji. It had the light of moon also, and Indra also gave her a few characteristics. And then finally Brahmaji gave her the weapons, and Mahadev gave the trident and the pinak, and Vishnuji gave the other weapons. Then, looking at her who had come from the assembled lights of the Devtas, the immortals, and the Mahishasur, who were experiencing joy, started to fear. The bearer of the pinak, with the trident in her hand,
presented it and said to Vishnuji and Shivaji, I am here to bring end to all the miseries. I am here to bring end to all the problems of the world. Varuna gave her the conch, Agni gave her spear, and Surya bestowed her with the rays. An ocean of milk was in her necklace, and her whole body was covered with multiple ornaments. So Kuber also came and gave her some of his jewels. The earth started to shake. The mountains were singing the sounds of victory as the Devtas started again in the fight with Mahishasura, with the Devi sitting on a tall lion and with all her weapons shining like the sun. So this is the full description that is given in the Devi Mahatmam chapter 2. I said the shloka in Sanskrit, then I'm trying to say whatever is written in English to make it easier for you guys to understand. Mahishasur was surrounded in the battle with thousands and crores of horses, elephants, and chariots. Other asuras also came in with the maces and javelins and spears and clubs. They began to strike her with swords in order to kill her. But the Devi Chandika very easily cut into pieces everybody who was coming in her way, without even a strain on her face. She was smiling with the gods looking at her, and she was running with her sword all across the field and killing anybody who was touching her weapons. Anybody who touched the weapons. So now the battle is now reaching to its final point. Some were rendered one-armed, some were rendered one-eyed, some were rendered one-legged. And they were completely waiting for the Devi to finish them. The trunks of many elephants fell as the great asuras were losing. And finally, they started saying to the Devi, stop, stop, we surrender. Mahishasur, being the proud one, said, I will go on and fight. So he goes on and fights the Devi once again. So he goes into a one-to-one combat now with the Devi. And this is what is mentioned in the second chapter of the Devi Mahatmam. The profuse blood from the asuras, elephants and horses flowed like large rivers. And Mahishasur, crossing that, went near to the Devi. Now, this is the chapter 3, in which the slaying of the Mahishasur happens, basically. So the Rishi says, then Chikshura, the great Asura journal says about this, basically, that Ambika, you have killed all our army, but Mahishasur will kill you. And Devi smiles again and says nothing. So the horses are killed, the elephants are killed, the other demons are killed, asuras are killed. Only the journal is remaining, which is Chikshura, and Mahishasur is left. So this the Devi now splits her bow and fires it into the sky, and suddenly thousands of arrows start coming from the sky, and the journal is immediately killed. Now the only one remaining is Mahishasur. So seeing the head of his general on a pike of an arrow, Mahishasur is very, very angry. He's very angry. So Mahishasur, after seeing his very valiant general king, which is Chikshura, goes and takes a leap towards the Devi. The lion of the Devi just uses his paw, and Mahishasur is thrown very, very far. So the lion leaps now and goes closer to Mahishasur and goes and sits on top of Mahishasur. And Mahishasur is now covered a bit in blood, and the lion has one paw on it, basically.
Enraged by this, Mahishasur is able to again. uh, uh, Mahishasur is very terrified. He is waiting what will happen, and suddenly he transforms into the buffalo and he's able to escape. So he becomes a buffalo again and he's able to escape. So Mahishasur is able to now attack as a buffalo to the Devi, and the lion again, mother's lion, comes out and gives another hit to the buffalo, and the buffalo goes flying many feet away. Now the Devi is again throws one arrow in the sky, and thousands of arrows come down, and they start hitting Mahishasur. And Mahishasur suddenly has to turn back into his head, as the buffalo is cut. So the head of the buffalo is now cut, and Mahishasur has to reappear as the real face again. He's come out of his transformed again into a human. He kept on transforming between a buffalo and a human. So enraged by this, the Chandika, basically goes and uses a sword and cuts his head and drinks the blood. Her eyes become red, and finally Mahishasur is finished, basically. So this is what we need to actually read in the third chapter of the slaying of Mahishasur. In Sanskrit, it says it goes as this: Shakradayaya Suragane Nihayate Tivirye Tasmin Durantami Surari Bal Chahe Devya Tam Tushtva Pranati Namra Shirodharamsa Vagbhi Prashasra Pulokadgam Charudeha. The most valiant, evil-natured Mahishasur and his army are finally destroyed by the Devi. Indra and the host of the Devtas are clapping in heaven and showering flowers on the Devi. And Devi is just having a smile and nothing else. Devyaya tatam idam jagad atma shakti nisheshya dev gan shakti samuh murtaya tam ambikam akhila dev maharshi पूज्यम भक्तिनाथ sman vidhaitu subhani sahna. To that mother goddess who pervades this world with her power, who is worshipped by all the gods and sages, whose powers are beyond everybody, she has granted us finally auspiciousness and happiness. This is what the rishis are saying and the devtas are saying. So it's very important to recite the Sanskrit as well, so that you get the essence of it, as I explained yesterday. Kim varnamya tav rupam achintyam metat kim chati virya masurya shayakari bhuri kim chaveshu charitini tavad bhutani sarveshu devashwari devaganadikeshu. O Devi, how can we describe your inconceivable form, or your abundant surpassing valor that destroys the Asura? You are the one who has killed all the demons, and you are the one who always wins these feats in the battle. So this is the fourth chapter of Devi Mahatmam. It's quite long. I will request you all to read it. You will find it very interesting. The whole encounter, as I explained in some details today, of how Mahishasur was killed and what is the message of the Devi. So we can, as I said, we need to do the very important thing today is Aigiri Nandini. We should read Aigiri Nandini, which is very strongly worded. There are two things to this as well. It is said that it is written by Adi Shankaracharya, but there was more additions to it in the 15th century by the poet called Ram Krishna Kavi, जिनको हम तेनाली रामा भी बोलते हैं. And another version says it's actually written by Tenali Rama, Ramakrishna Kavi in the 15th century. So we can just leave it to that. But
The important thing is to now read Aigari Nandini. I'm just trying to open it, and I hope you all can open it as well, just so that we can read it together. Wow, it's not coming. Just give me a second. I have it in a book as well, so I can read it from a book. And we can all read a bit of Aigiri Nandini and finish this session, because today's stuti is about that. ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल्यसुते सुरवरवर्षिणि दुरधरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किलबिषमोषि कोशरते धनुजनिरोषिणि शितसुत दुर्मदशोषिणि सिन्धुस्तुते एविशतखण्डविखण्डितरण्डवितुण्डितशुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातिति खण्ड विपातिति मुण्ड भताधिपते धनुरसुरङ्गरणशतसङ्ग परिस्पृध अङ्गनटातकटे कनकपिशङ्ग पिशाच कनिशङ्ग रसद भट शृङ्गहाट बटुके कृतक चतुरंग बाल शितिरियंग घटद बहुर रंग रतड बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल्यसुते। आइगिरी नंदिनी में भी बहुत श्लोक हैं, आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आपकी साधना होती रहे, नवरात्रि का पूरा आनंद लेते रहें मंगल कामनाओं के साथ। कल हम फिर मिलेंगे देवी के नए रूप के साथ। धन्यवाद।